Greetings. This is me again. Me, me who, the experiencer of life, not the observer, the experiencer of life. So I'm going to talk miscellaneously about my condition, my belief, what I experienced, and what I contemplated. About religious people and Muslims in Pakistan and also other places. Sorry, I just put my hand finger on my mic thumb actually. So if there's a sound static, I apologize. And if the audio is not good quality, I apologize for that. So this is for those who care enough to go the distance to hear each and every voice, because I feel godless. And religion, I lived in Pakistan most of my life. Can you just was just thinking, my God, how can they do this? Corruption on one hand, and then Islam on the other hand. So much so that I mean, I have no words. So could this religious belief be an emotional insecurity? Because then, there are some psychotics and psychopaths. Oh, sorry, I don't mean to put down the people truly suffering from and trying their best to be good and normal, chasing after goodness and not finding it within themselves, because the environment is so polluted, corrupted with corruption, that we get trampled upon. We really will. So I fell flat on my face. I was down on my knees first when they separated me from his Islam, and now flat on my. And then later on, I fell flat on my face, trying to bless Pakistan, bless my principal. Recently, just had a dream that she's changed on me. She's changed as a person, not only on me, but someone like this great person uh, that they actually the family decided to get them married, right? This is my dream, and then the principal changes. I mean, the family decided to, they chose this girl for principal's youngest son. She was really good, and like my father said, things in my, oh, so like about elderly people. So he should include his mother also, right? He used to tell me about the principal that when she becomes old, she will be cranky and all this, discouraging me from getting attached. But I got attached to my principal anyways. It just took one look, one moment, not look. It's like, sorry, I'm joking. This is not. This is for the decent people. What can I do? I'm cracking up. Ya Allah. Can you beat this? On one hand, Islam. Or don't you think the Muslims are just, even us Shias? Us Shias, we have a different story also, but but we also, no, we also have psychopaths in our religion who use Islam. And too much,
they change, the men change on the night of the nikah. Overnight, they change. So not only old women and all this that my father used to refer to. Should speak about his mother actually. So sorry, I'm like this skeptical and all funny. Funny, funny, funny. Money, money, money. So funny in the rich man's world. But look at these अंग्रेज, हम तो अंग्रेज की शैदाई हैं. ये अंग्रेज देखें कितने लेवल हेडेड, कितना सलीके से करते हैं. सलीका is what disciplined way of तो हमारे मुसलमान अरबों को ऑयल मिल गया तो हमने बहुत पैसा पैसा यानी खेला खेला पैसे के सिंस चाइल्डहुड. लंदन में हम पाउंड्स के साथ खेलते थे. और ऐसा. और ये पाकिस्तानी Arif Ajakia told me, no, I mean, I said that on YouTube, that इधर दुबई में ना, दुबई को भी कुछ काम नहीं आता कि एक्स पाकिस्तानीज को लाते. अच्छा, अभी आप लोग बोलेंगे कि ये पोर तुम लोग अपने आप को पोर नहीं समझो. तुम लोग कुरान में लिखा है, आयत है कि जस्टिस तो करना चाहिए इवन इफ इट इज़ अगेंस्ट द पोर. कि आप फिर मुझे पता है ये मुसलमान पाकिस्तानी क्या कहेंगे कि एसी में बैठे अरे तुम लोगों के ये खटार गंदी नाली के कीड़े इधर आए हैं, ऑफिसर्स बने हैं पुलिस में, शेख भी बन गए हैं, नाम चेंज कर दिया है कश्मीरी शेख. और फिर अरबों का पीछे काला मुंह करते हैं, गिलाएं करते हैं कि ये अरब क्या हैं और ये जाहिल हैं और ये हैं और वो हैं. अच्छा, दुबई चलो पूरा ड्रामा बना था सीरीज. सो माफ़ करना इधर मैं उर्दू I've started to speak in Urdu. It is such a dirty language. Discrimination. पठान भाई ये लोग बहुत अच्छा. ये जो अमेरिका तो तो ये मैंने कहा है, खैर आई डोंट वांट टू रिपीट माई सेल्फ. अमेरिका का तो वो दीन है पावर. अच्छा, अरबों को मुसलमानों को नीचे करना. अच्छा, जूस कर रहे हैं हम पे. अमेरिका ने आजकल नहीं 70s से from 70s if Christian Fair can say something about this. So America is number one terrorist, we all know. नहीं मैं अमेरिका अभी अमेरिका oh no, I have a case कराची अमेरिकन स्कूल. हाँ, तो ये लोग some of these Americans will sell their for money oil. I don't know what kind of terrorists they are. I have yet to contemplate on that. लेकिन पहले मैं अपने जो बहुत करीब नियर मी उनका निपट लूँ, फिर बाद में अमेरिका का नाम लूँगी. हाँ, the reason why I have a case in Karachi American School that Armin Nawabi used to say obsessed with America, against America. Now if someone will tell me that it is the Americans, yes, I will believe that, because the way they got me out of very cunningly, connivingly and all this, right, treacherously, blaming it on that poor old elderly lady. Miss Asteria Dessa was like decades older to me. So how they do this conspiracy. लेकिन हम लोग खुद हमारे लोग हैं ना जो
our own people are to be blamed for this. जो ये मुसलमान देखते नहीं हैं. हाँ अभी today I got up with a bad dream, like the principal has changed and she was so humble and but no more, and she doesn't listen and obstinate, and she even got like in this dream I see what's happened in my life with the people I loved and caring service ladies changing or having cancer or misunderstandings spread. Have you seen that movie Amber, the old Indian movie, Nargis and Raj Kapoor? That's misunderstandings and treachery and all this. So Amber was after the king, and the king was really good. So could be like a Baba Zayed of UAE, United Arab Emirates. अभी हमारे शेख साहब ने मीडिएशन का प्रपोजल अभी लॉ भी निकाला है कि if you that's so great, that's really good, some good news has come. The शेख मोहम्मद ने दुबई के शेख ने His Highness शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम खैर तो ये है this and he's brought about a law which says you can use mediation now. It's been implemented in Dubai. I think for the whole of UAE, if no, it depends. I don't know how this goes and how it works here. So whether the whole of UAE or just in Dubai. So if the other sheikhs agree and follow suit, then they can also implement it in Fujairah, like for example. I think, I'm not sure. I cannot say much about that. So just it came out wondering. And so yeah, this is good news. And I woke up with this. So I've been playing for the principal. I couldn't play with the principal table tennis. I asked her, I requested her. One thing I requested and never got. So if you request this lady, you never get that. You never. She never listens. She's like me. No, I don't listen for the good, my, for my own good. I don't listen to this good side of mine. No, I'm a little better than her. She doesn't like people who boast about themselves. My principal, Mrs. Munira Gulzar, अचानक चेंज हो गई, capricious. ख्वाब still left a bad taste. Oh my God, terrible. So this dream I had recently, just woke up. So having this dream. So yes, I've seen this in my life. There's been heartache and pain. I don't know if I can take it anymore. No, but I knew that you would turn cold. And she completely loses a good daughter-in-law, a really good one. Although maybe also she, the daughter-in-law is telling her to consolidate, and she's a speaker. The शायद the principal, she doesn't like too much shosha. She likes humble humility. She thinks that she judges people very harshly. Actually, she also judged me
She thinks if let's say if I say that I miss, can I, her this thing, what thing, this thing was not working. So I said, Miss, let me touch it. I'll make it. What shall I do? This is the most easy way out. Maybe I will become a witch doctor. At least let me become something. So, Jesus of Nazareth and oh God, the miraculous that saved my life. So she thought that I was, then, she thought that I was bragging about myself. If, like, can you imagine, like, when I went and told her that, Miss, in my dream, I had this dream last night that I tell you, Miss, let's go and pray. And she said, you told me. Me to pray. Well, Waki ma'am, yes, because I don't like these rituals and everything. And Hindus have a lot of rituals. Baba, yeah, I cannot follow Dr. Pillai Babaji. He gives so many rituals, Abhi well, for the ancestors. Every day he says you have to do this. And I left Bibi's Kahani all the time. Bibi's Kahani for traveling, Bibi's Kahani, uh, Bibi Sayyida's Kahani for traveling. So, anyways, all these rituals I really don't like. Yes, so I was thinking that Hindus have a lot of rituals and all that. Abhi subah ko uthe or bad feeling, someone in my head going slide, slide, slide. Sounded like my great grandmother's voice from my father's family. And then there's a one YouTube, Dr. Pillai recently said that we should do Darpanam. I think it is called Darpanam for the ancestors. Every day alone. I do not get time from, keeping my off this pain, groaning, moaning. Pathetic. I think principal has beaten me in table tennis. No, those are, I just play online and all this. Those are bots, so they're real people too. So, just joking. This is my way of joke. I don't complete my sentences properly. तो अभी हिंदुओं पे फिर aren't the Hindus? अरे Hindus, if they are, let's talk like this. If the Hindus are cunning and competitive and all this, अरे हमें इन कांटों को भी गले से लगाया, फूलों से चोट खाया. So, ये तो हमारी अरबिक उर्दू है. See Jyotikaya. Devdas new Shah Rukh Khan and Aishwarya Rai, the most beautiful Indian actress ever. So now what shall we do? What can we do? So this is just that I have played table tennis, all my energy drained, and early morning I was groaning and moaning. My energy was draining. It wasn't that pain. No, I don't know what it was. It's psychological. Okay, it's happened again. Yes, because I've spoken. I think I went overboard with the ping pong online. Yeah, only can you imagine? I have no strength. My liver is hurting. Doctor, help, help.
So I'm much grateful to those who have saved my life. No, if they had killed me, it would have been better. But sorry, I cannot give you anything in return. Not even a thank you. Dr. and Master Shah, Master Francisco, Francis, uh, Francisco. I don't remember his name properly. So, Jai China. Uh, I'm in a funny mood today because my principal changed on me. So I'm like a monster skeptic and all this. It's evil ground. I'm agitated, aggravated mood of. I cannot help myself. Someone needs to help me then. So what is with this India? Krishna and Radharani. Anyways, I believe Mahadeva. Mahadeva. So Sadguru is Shiva. So ये शिवाजी, you see, in my life there's been hurricane pain. मैं जिंदगी में हर दम रोता ही रहा हूँ, तड़पता ही रहा हूँ, रोता. So जिंदगी क्या नाम दे तुम्हें, क्या नाम है तेरा. हम तो भूल ही गए. और डैडी हमें याद दिलाओ, मेरा तुझसे है पहले का नाता कोई. There's harmony in this song. See, I'll show you symmetry. I hope my principal is not in the cemetery, in the grave or something. अल्लाह मुझे भी दफन कर देते आप प्रिंसिपल के साथ. मिसेस मुन आप हो पाकिस्तान जो है ना, तो अभी पाकिस्तानी जो है ना वो, हाँ, तो आरिफ हजाकिया ने मुझे दे दिया एक हिंट कि यहाँ ये कश्मीरी वश्मीर शेख बन गए हैं, नाम हम बदली कर दिया है, काला मुख क्या है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का. पूरी दुनिया में यानी सेक्स स्कैंडल फैल गया. तो और ये हमारे जो लोग हैं, हम बड़ा वो करते हैं, एक तो एक अल्लाह पे, दूसरा हम बहुत यानी हमारा फूड भी अच्छा है, हम बहुत वार्म पीपल हैं, इंडिया से भी हिंदुओं से भी वार्म हैं. और ये हैं, अरे ऐसा वार्म क्या होना कि पीछे फिर स्टैप करो पता नहीं चले, इससे अच्छा कोल्ड हो जाओ. हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम बाजी. और बाजी को तो ऐसा हमें शौक दिया है इन पाकिस्तानी मुसलमानों ने, हम बता नहीं सकते. और रही और तो और शियाओं की बात, तो इमाम हुसैन, अल्लामा इकबाल ने कहा था हमें तो कोई इमाम हुसैन जैसा हो, वो एक साइड पे इतना सन, वार्मेस्ट राइजिंग सन, वो एक गाना भी है अमेरिकन, माई वार्मेस्ट राइजिंग सन. और ऐसा हम कभी वार्म हो रहे हैं, कभी इमोशनल हो रहे हैं, कभी क्या हो रहे हैं, कभी गुस्सा कर रहे हैं. तो हम लोग यानी फैले हुए हैं, we're not collected calm people. और अगर collected और calm people हैं तो वो चीज़ से हमें नहीं है. तो हमें इमाम हुसैन जैसा, वैसे bottom line, we couldn't get someone like Imam Hussein. So we were like, maniacs. We became bipolar. That's why some of us Shias, like हमें वो नहीं. और तो फिर हमने His Highness Aga Khan को देखा. आप देखें, look at His Highness Aga Khan, at least the affection he shows to his people. So yeah, that was my past
In the past, my late beloved Aunt Gaura told me that we used to be like Amitabh Bachchan. I was Amitabh Bachchan serious. Anand, and she was, I used to say Shashi Kapoor. She was more jolly and she was very jolly. But God knows who whether Bichari with me. I was a very serious person. Excuse me, I have this bad habit. और ये अरबों को भी काम नहीं है, पाकिस्तानियों से शादी करते हैं, पाकिस्तानी पुलिस हमें दिया है, पाकिस्तानी ये दिया है, पाकिस्तानी टैक्सी ड्राइवर हमें दिया है और पाकिस्तानी रेस्टोरेंट से तो दिए हैं बड़ा नाज है। तो हम एक्चुअली किसी गरीब का दिल दुखाना नहीं चाहते हैं, लेकिन माफ़ करें आज ये कि अरे मीमी भी गरीब थी, सर्विस लेडी थी, गुर्बत में यतीमी थी, है किधर आई, बाई का तो घर लौट गया, अब किस के घर आई, ज़ैनब को कलक सेना, मदीना है कि बदहार। एक्चुअली ये जो पाकिस्तानी है ना, ये लोगों को गरीब कर देते हैं, अच्छे अच्छे लोगों को गरीब कर देते हैं और उनका स्टील करते हैं। जैसे मेरी मदर का रिलेटिव चागला अकील, माय मदर्स रिलेटिव अकील, इतना अच्छा आर्किटेक्चर। ये कश्मीरी आ गया ना, कश्मीरी मुसलमान अच्छा, अब मैंने आरिफ अजा के उधर पता नहीं मैं बात करूँ या नहीं, अरे ये लोग कह रहे हैं कि अभी कश्मीरी मुसलमान जहाँ जाना चाहें, अगर आपको पाकिस्तान अच्छा लगता है, यानी अब कश्मीर को ये लोग इंडिपेंडेंट करना चाहते हैं। अगर यानी मुसलमानों को पूछ, अरे कश्मीर तो इंडियंस हिंदू, वैसे भी हमने पाकिस्तान ले लिया, उनका सिंध ले लिया, उनका बलूचिस्तान ले लिया, उनका सब कुछ ऐसा ले लिया। अब कह रहे हैं कि, लेकिन ये कोई मुझे राइट समझ में नहीं आई। मुसलमान हमें हमेशा चाहते हैं, अच्छा कश्मीर अगर इंडिपेंडेंट होना चाहता है तो इंडिपेंडेंट हो जाए, मुसलमानों के पास चले जाए। हिंदुओं का कुछ राइट ही नहीं है। और आपने जो मैंने सुना कि 13 for 30 अल्लाह, तो ये मुसलमान एक तरफ से जो है ना बड़ा अपने आप को समझते हैं, वन गॉड, ये सब एक इमोशनल इनसिक्योरिटी, हैवी कंडीशनिंग की वजह से होगा कुछ है ऐसा, कुछ साइकोलॉजी है ये रिलीजन्स की कि ये कुछ हमें वो सिक्योरिटी देते हैं। बाइपोलर हो जाता है, मैनिक हो जाता है, मैनिक मंडे जस्ट अनदर संडे बैंगल्स, यू सी। सो हम भी पठान, हमारा जो हम जिसको नहीं चाहते हैं ना, उसको हम कर देते हैं गर्दन मिस दिशा ने हमें बोला कि हम पठान जैसे हैं हम जिसको चाहते हैं उसको हम सर पे रखते हैं, जैसे हमने मिस दिशा को सर पे रखा था और जिसको नहीं चाहते हैं उसकी गर्दन कम कर देते हैं तो ये हमारा मिस दिशा, माफ़ करना तो हमारे इन्वायरमेंट में ऐसा था, हम क्या करें।
हम पठान की तरह वफादार निकले। शुक्र है कि पंजाबियों की तरह और कश्मीरियों की तरह दगाबाज नहीं निकले। पैसे के लिए अपना नाम भी बेचते हैं, सब कुछ बेच देते हैं। दुबई में आए, अच्छा अभी दुबई में हमारे आरिफ मिस्टर साहब, भाई साहब आरिफ अजा क्या कह रहे थे कि इधर एक्स जो उधर के गंदी नाली के कीड़े पुलिस ऑफिसर्स या जो मिलिट्री में है ना, एक्स 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 वो इधर आ गए हैं, पुलिस ऑफिसर्स बन गए। तो ओह माय गॉड, इन अरबों को खुदा इनको अक्ल दे, मुझे पैसे दे। हाँ वैसे पैसे के लिए तो लोग अपनी माँ को नहीं छोड़ते हैं। कश्मीरी लोगों, तुम लोगों की इतनी बात नहीं करो, जनरली इट इज़ वेरी वेरी डॉक्टर जॉन, डॉक्टर डॉक्टर नो, मिस्टर जॉन हारिस सुल्तान, हारिस सुल्तान को सल्तनत देंगे हम। साइंस, साइंस सल्तनत। अच्छा हम एक ब्रेक ले रहे हैं, सॉरी कट कर रहे हैं अपने आप को बिकॉज एनर्जी ड्रेन हो रही है। बड़ा मज़ा आ रहा है इधर। हाँ मौला मज़ा लेने वाला। पांडुरंगा मज़ा लेने वाला। परमहंसा विश्वानंदा की जय। वैसे हम तो अल्लाह बेचारे ये कभी हिंदू बड़े वो होते थे नादान, राधा रानी को इन्होंने अपनी गॉडेस बना दी। अरे प्यार, डिवाइन लव, और ये वो, और श्री कृष्णा बेचारा अभी तो वो सुन्नी मुसलमान है सब भाई, हम पता नहीं कौन। नहीं हम तौबा करो, मुसलमान दूर की बात है, दूर की बात है। नहीं नहीं एक्सक्यूज मी, जहाँ पे सवेरा हो वहीं पे बसेरा, नहीं नहीं दूर की बात। हम तो मुसलमान से बहुत अच्छे हैं बाबा। हमारा दीन है किसी को हार्म नहीं करो, पैसे के लिए भागो नहीं पीछे, अरबों के सकअप नहीं करो। उधर सब गंद किया अपने पाकिस्तान में, इधर आ गए दुबई में, फिर अरबों पे अभी। अरब तो जाहिल हैं, आप लोग तो जानते हैं कि अरब जाहिल हैं। अरबों को एटलीस्ट ये इधर यूएई में मैं एक सजेशन दूँ, अंग्रेज़ को हेड ऑफ पुलिस ऑफिसर बनाना चाहिए था, लेकिन इन पाकिस्तानियों ने ऐसा बेवकूफ़ बनाया है। मुसलमान 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 से बिजनेस करोगे, मुंह के बल गिरोगे। मुंह के बल क्या बोलते हैं, पल नहीं है, पल वो तो प्रिंसिपल, पल पल दिल की बस। So today it is a funny day for me, funny moment without the principal playing ping pong. Okay, I have to go drain more energy, and this is an addiction. This is देखो खामा खाम, you know how much tennis players they practice, मुझे बदनाम कर रहे हैं। अभी तो मैंने स्टार्ट किया है कि this is an addiction, you have to practice practice practice, so it takes a lot. Anyway, so what happened is that I had to order food because my liver was hurting. तो लूटे कोई मन का ढक्कन बन के मैं अरबों का साथी। तो तुम अरबों को नहीं लूटना, हम तो आए हैं इधर
ریفیوجی کی طرح اپنے پردادا کے لینڈ پہ یا کنٹری شیخ ٹاؤن جو بھی ہے، یا عرب سدھر جائیں لیکن سدھریں گے کیسے جب تک بد سایہ ہے پاکستانی مسلمانوں کا یہاں. معاف کرنا میں کسی کا دل توڑنے دل تم لوگوں نے تو انشاء جی اٹھو اب کچھ کرو اس شہر میں جی کو لگانا کیا. تو یہ پاکستانی مسلمان، یہ پنجابی، اسپیشلی پنجابی سے بھرا ہوا ہے دبئی. پنجابی ہیں ادھر یو اے ای میں. دیکھو کھوجا سندھی، اللہ بچارے وہ شاید مسقط. اچھا اب ہمارا یہ ہوا تھا کہ کچھ لغات ہی ادھر آ گئے تھے تو ہم نے ارے ہم ہم بنجاروں کی بات مت پوچھو جی. ارے ہم عربوں کو ایسے یوز نہیں کرتے ہیں پنجابیوں کی طرح اور کشمیری مسلمانوں کی طرح. اچھا on a bad note I have to end now. We are monster without Mrs. منیرہ گلزار. اگر مسز منیرہ گلزار مجھے ایسے خواب میں آئے گی اور بدل then I will bring the sky down. God, you are listening? سن رہا ہے تو رو رہا ہوں میں. Goodbye, dear foes and friends.